Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following content of list to discuss. So let's discuss. The first topic says about the carbon border tax. So recently with the 27 editions of the Conference of Parties in Sharm el Sheikh nearing its final stages and efforts being ramped up to arrive at a conclusive agreement, we could see that a consortium of countries, including India, joined saying that carbon border tax, which could result in market distortions and aggravate the trust deficit among parties, must be avoided. ठीक है, तो आज ये जो कार्बन टैक्स के बारे में बोला गया है, कार्बन बॉर्डर टैक्स, ओके, so this is directly an issue with the countries that you can see in the list, okay, that is Brazil, India, China, and South Africa, okay. So these countries is directly opposing the carbon border tax, which has been initiated in this COP27. So what is this carbon border tax? So it is a tax on carbon emissions attributed to imported goods that have not been carbon taxed at source. Okay, so this carbon border tax proposal is a part of the European Commission European Green Deal. Okay, so European Commission's European Green Deal, okay, who wants to make the first climate neutral continent by 2050. तो ये यूरोपियन कंटिनेंट चाहता है कि वो लोग 2050 तक अपना आपको कार्बन न्यूट्रल बना दे, जो कि आज हम लोग सोच रहे हैं 2070 तक, ठीक है, क्योंकि वो लोग डेवलप्ड है, ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, तो इसलिए आजकल वो लोग बहुत कम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कंट्रीज लाइक अस, ओके. So this national carbon tax is a fee that government imposes on any company within the country that burns fossil fuels. तो आज जैसे हम लोग थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें भी फॉसिल फ्यूल्स हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो उन लोग के ऊपर भी ये लग जाएगा. Okay, so therefore in contrast a carbon border tax is able to protect a country's local manufacturers, motivating them to adhere to green regulations. Okay, so यहाँ पे बोला गया है कि this new carbon border tax can therefore lead to a more level playing field against importers, especially those from nations with more lax environmental standards. So how this will impact India? See, as India is directly the third largest trading partner, the EU accounted for around $74.5 billion worth of trade. Okay, and this is around 11.1% of total global trade that we deal with EU. Okay, so by increasing the prices of the Indian made goods in the European Union, a tax would make Indians goods less attractive for buyers and could shrink the demand of the Indian products. So therefore, this tax would create serious near-term challenges for companies with a large greenhouse gas footprint and a new source of disruption to a global trading system, okay, which is already ruffled up by some of the trading wars, some of the tariff wars, renegotiated treaties, and rising protectionism. ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे जो हम लोग आज अगर ये कार्बन बॉर्डर टैक्स लग जाता है, तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द इंडस्ट्रीज टुडे इन अ कंट्री लाइक अस व्हिच इज प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूटिलाइजिंग द फॉसिल फ्यूल्स. तो यहाँ ईयू का जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए we cannot cooperate with them, and therefore these countries like Brazil, China, India, and South Africa, they directly opted out from this discussion of being levying this carbon border tax. ठीक है, सो देयरफॉर ये कंट्रीज जो है, ओके, इस कंट्रीज को बेसिक ग्रुप बोला गया है. सो दिस बेसिक ग्रुप्स ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना. Okay, and therefore large economies that are significantly dependent on coal has for several years has voiced common concerns and reiterated their right to use fossil fuels in the interim during their country's eventual transformation to clean energy sources. Okay, so यहाँ पे ये कार्टून देख सकते हो कि कैसे एक बाहर का, कैसे एक इंग्लिशमैन इज डायरेक्टली मेकिंग दैट व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट डू, और ऐसे लोग जो एक टाइम में कार्बन एमिशंस कर करके ओके अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप किया है, तो आज अब लोग ये लोग हम लोग को सिखा रहे हैं कि कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए. ओके, so therefore this text is totally not approved by these basic countries, and in this common platform we can see India and China coming together. Okay, तो यहाँ देख सकते हो कि today's India's approach is how much tending towards the multilateral world. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, मॉस्को टॉक्स. ओके, सो रिसेंटली हम लोग जानते हैं हमारे EAM साहब डायरेक्टली गए थे मॉस्को पे. ओके, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बातचीत किए.
ठीक है. So today this phenomenon, okay, of going ahead with this talks, okay, तो यहाँ पे इंडिया जॉइंस मॉस्को टॉक्स फॉर इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन काबुल. ठीक है. तो आज हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान टोटली एक जो आज कौन चला रहे, तालिबानीज चला रहे. ठीक है. सो टुडे वी कुड सी अबाउट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अफगानिस्तान. ठीक है. सो अफगानिस्तान में आज मॉस्को जो प्रॉब्लम है उसका एक क्लियर जो एक प्रेजेंटेशन दिया गया है इंडिया के द्वारा कि हाउ अफगानिस्तान इज यूजफुल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रीजन ऑफ साउथ एशिया. ठीक है. So today we know about that India participated in this meeting, and this Moscow format is one of the several dialogue platforms of Afghanistan. Okay, and it was set up by Russia for peace and stability in Afghanistan in the year of 2017. Okay, so this Moscow format was introduced on the basis of six-party mechanisms for consultations between special representatives from Russia, Afghanistan, China, Pakistan, Iran, and India. Okay, so the present meeting includes a group of 10 nations, which includes India, China, Pakistan, Iran, and the Central Asian republics with the Taliban officials. Okay, so what is the highlights of the recent meeting? So यहाँ पे इंडिया ने participate किया है. Okay, and during this meeting, the all the participation discussed about various issues which relates with Afghanistan. Okay, supposedly यहाँ पे issues like humanitarian issues, okay, issues like intra-Afghan talks, issues like providing assistance to them, in issues like having an inclusive and representative government with them, okay, and also how to counter threats of terrorism and ensuring regional security. ओके तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुआ है इन दिस वन. ओके सो देयरफॉर द टोटल क्रक्स ओके इज दैट इस ये जो शिफ्ट है that is the ongoing crisis in Afghanistan is becoming more complex today as the West has shifted its focus towards the conflicts in Ukraine, and several states have still not recognized the Taliban, thus aggravating the current crisis. So these platforms like Moscow format consultations on Afghanistan are important to ensure regional stability and security, not only in Afghanistan but also in some of the neighboring countries like Pakistan, Central Asia, and also countries like India. ओके तो यहाँ पे सब कंट्रीज इकट्ठा मिलजुल के चाइना वाइना के साथ अफगानिस्तान में जो टर्मोइल क्रिएट हुआ है. सो आज ये टर्मोइल जो यूएस के एग्जिट के कारण हुआ है, तो इसमें ये सब थिंग्स को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे लेके आए फिर से अफगानिस्तान को, कैसे अफगानिस्तान को फिर से स्टेबल करें, उसके ध्यान में रखते हुए वी आर डायरेक्टली टॉकिंग इन दिस मॉस्को फॉर्मेट. So India is directly a member to this platform, and India is directly sharing its view how to stabilize this Kabul or this country of Afghanistan. ठीक है, तो ये था about this one. Next, new docks and speedboat for Pangsong Lake Patrol. तो यहाँ पे इंडिया ने डिप्लॉय किया है some of the new docks, okay, upgrades their speedboats for directly having some of the close patrol in this Pangsong Lake wala place. Okay, so we all know about the Pangong Lake. It is one of the major points of the military confrontations between India and China. Okay, and recently we have heard about China has been building new bridges and other key military infrastructures in and around this lake to facilitate the faster movement of its troop and cargo. Okay, and therefore today we know about the locations of this Pangong Lake. Okay, so it is located at an elevation of roughly around 4,200 meters. Okay, that is above sea level. It is directly a transborder lake across eastern Ladakh, western Tibet. Okay, so ye hai. Then we could see about a 5 kilometer wide at its broadest point. Okay, so practically China controls the 2/3 of the total length, while the rest is controlled by India. Okay, so today we know about the fact that how this Pangsong Lake, okay, incident has taken place, and due to which some number of recent clashes has been going on between India and China. तो आज इसके एरिया में आसपास में जो एक पेट्रोलिंग को किया जाता है, ठीक है, तो आज सिंस 2/3 एरिया डायरेक्टली चाइना के पास है, तो उन लोग का यहाँ पे पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और उन लोग ने यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए अच्छे से ब्रिजेस और रोड्स बनाए हैं. और हमारे साइड में जो हम लोग का लेस्ट 1/3 पोर्शन है, तो ये बेसिकली नॉट कनेक्टेड विद एनी नंबर ऑफ ब्रिजेस, और हम लोग से यहाँ पे जो कनेक्शन है ये टोटली इट्स नॉट गुड. ओके, और यहाँ पे जो हम लोग का पेट्रोलिंग वेसल्स भी थे ये भी थोड़ा बहुत कम था. ओके, लेस एफिशिएंट थे. तो आज यहाँ पे आर्मी ने डिप्लॉय किया गया है न्यू डॉक्स एंड स्पीड बोट्स फॉर दिस एरिया, so that India could directly control, India could directly have a greater access to this region, so as to make this area very much of peaceful and not
to take any forms of aggression or disputes in this region in the coming time periods. ओके तो यहाँ पे इसीलिए ये वाला चीज बहुत ज्यादा न्यूज में है, देख लेना, ठीक है. यू हैव टू नो अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ दिस पांगोंग लेक, ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फॉर ऑल सच थिंग्स. तो पांगोंग लेक के जितने भी स्पेसिफिकेशंस है, ओके, सब स्पेसिफिकेशंस जान लेना. ओके ऑल्सो वी नो अबाउट दिस पांगोंग लेक बीइंग अ लेक, ओके, व्हिच इज बेसिकली अ लैंडलॉक लेक, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोहेरिक. ओके एंडोहेरिक लेक, ठीक है. तो इसके जो स्पेसिफिकेशंस है, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स है, ये सब देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. पेंशन टू वीमेन ऑफिसर्स, छोटा सा एक न्यूज है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली asked government to grant pensions to 32 women IF officers who claim that they have been not given justice, okay, when they were serving in the Indian Armed Force in basically this short service commission. ठीक है. तो आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बोला गया है सेंटर को और इंडियन एयरफोर्स को टू कंसिडर ग्रांटिंग पेंशनरी बेनिफिट्स टू सम वीमेन ऑफिसर्स ऑफ द शॉर्ट सर्विस कमीशन. ठीक है. तो यहाँ पे जितने भी 32 महिला थे, उनके कम से कम 3 ऐसे लोग थे जिनके हस्बैंड्स देश के नाम पे शहीद हुए हैं. ठीक है. तो इसीलिए दिस पीपल आर टू बी गिवन some of the pensions which basically was rejected by the Indian Air Force as well as the government. तो आज ये 32 women's ने ये केस जीता है. तो आज इंडियन एयरफोर्स को इन लोग को पेंशंस देने के लिए मैंडेटरी किया गया. ठीक है. तो दैट्स द थिंग, छोटा सा एक न्यूज़ था. नेक्स्ट पे आते हैं. Young professionals exchange. So recently we have seen about the terms happening between our Prime Minister and as well as the Indian origin Prime Minister of Britain, that is Rishi Sunak. Okay, so he announces a new partnership with India at the G20 summit in Bali, and thus under this UK India Young Professional Schemes, UK will offer annually 3,000 degree holding Indians in the age group of 18 to 30 years of age places to work in the UK for up to 2 years. तो इसी बीच हम लोग के जो प्रधानमंत्री और उनके प्रधानमंत्री के बीच जो बातचीत हुआ है, इस बातचीत से ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि ये बातचीत बहुत फ्रूटफुल हुआ है, बिकॉज नाउ दिस यूके हैज मोर लिंक्स विथ इंडिया देन ऑलमोस्ट एनी कंट्री इन द इंडो पैसिफिक रीजन. Okay, so this scheme will commence in the early 2023 and be on a reciprocal basis. Okay, so with Indians comprising almost a quarter of all international students in the UK and Indian investment in the UK supporting 95,000 jobs in the country. So this UK government called for the launch of a program, a significant moment for the UK-India relationship. Okay, and also India is having some of the talks in dealing with the trade activities or dealing with some of the trade disputes that India have today, because India does not have any free trade agreement with these countries, basically with the EU nor with the UK after the Brexit. तो इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे ये ट्रेड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है इसके सपोर्ट में भी बातचीत करना चाहे, लेकिन अभी देखते हैं, वो अभी टाइम लगेगा. ठीक है. तो देखते हैं वो फिलहाल क्या होता है, लेकिन इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टुडे दैट व्हाट ऋषि सुनाक did with respective to the young professionals exchange by the 2023. ओके और इसके वजह से हम लोग बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स को हम लोग एक्सचेंज कर पाएंगे एंड वो लोग वहां पे जाके अपना आप को एस्टैब्लिश करके जॉब कर सकते हैं. So that's a very good step as well as a positive step that has been cooperated between India and UK. Okay. Lastly, the editorial saying about Baghdad gets a government, but violence haunts Iraq. तो ये क्या है? So recently we could see that almost 3 years of caretaker administration and elected government is finally in place in Iraq. So the divide among the Kurds of Iraq came to end recently as the Kurdistan Democratic Party withdrew its insistence on nominating the country's president and accepted the claim of its rival group, that is the Patriotic Union of Kurdistan. ठीक है. So as PUK proposed its candidate Abdul Latif Rashid for the office of president. तो ये अभी नया प्रेसिडेंट है यहाँ पे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. So this Abdul Latif Rashid was appointed as president with majority support in the parliament. Okay, and thereby he nominated even Muhammad Shia al-Sudani as the new prime minister of Iraq. ठीक है. तो ये नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, so now we could see about the political system in Iraq. So आज हम लोग जो जानते हैं about the muhassasa system in heart of the political system in Iraq. So this system was transferred to the country during the occupation by the US in 2003. ठीक है. तो ये मुहासासा क्या है? It's directly an apportionment of the Iraqi politicians' rule. So as we know about that, this Iraqians, they directly were protesting against this muhassasa system.
Okay, because as several young people demonstrated across Iraq has raised their voices about the absence of effective governance and external influence only rule the system of Iraq. ओके तो इसीलिए यहाँ पे जो आज डिस्प्यूट है, तो ये डिस्प्यूट क्योंकि ये जो नए पार्टीज आए हैं ये लोग भी उसी सिस्टम को ही फॉलो करेंगे, उसके लिए ये जो सिटीजन है ये टोटली नाराज है। ठीक है, सो टुडे वी कुड सी दैट ओवरऑल if this political chaos in Iraq, which began around October 2019, seems to have eased finally with the appointment of the elected government in Baghdad. Okay, however, experts believe that violence could continue to define Iraqi politics, which threatens to disrupt the delicate peace existing in the West Asian region. ठीक है, तो आज यहाँ पे जो लोग पावर में आए हैं, ठीक है, दिस पीपल डायरेक्टली वांट्स टू हैव a stabilized form of government so that they could directly unite the whole Iraqi population once again. Okay, also the other side you could see that they wants to go ahead with a coordination framework, which was a collection of the pro-Iran Shia parties endorsed government formation, which is based on Shia unity that would maintain Shia domination. ओके सो देयरफॉर यहाँ पे जो शिया और सुन्नी का डिवाइड है इसको लेके भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्टोरल पॉलिटिक्स होता है। सो इवन इन द लास्ट जो इनका प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफा अल कदीमी, okay, so he wants some form of electoral reforms so that he could have some of the people directly gets unified and to solve the issues that is going around in Iraq at that time. बिकॉज ये जो प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस मुहासासा सिस्टम है ये डायरेक्टली 2019 में शुरू हो गया था। ओके एंड एवरी इराकियंस डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेटेड देयर वॉइसेस अबाउट दिस मुहासासा सिस्टम। ओके एंड द स्टेट रिजॉर्टेड टू वायलेंस एंड इसीलिए आज 3 साल तक यहाँ पे इंस्टेबिलिटीज बना हुआ था। ठीक है, लेकिन टुडे इफ यू सी अबाउट द टाइम बीइंग, ओके, तो आज यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है एंड दिस सिस्टम इज डायरेक्टली बीन अप्रिशिएटेड by everyone because today slowly and slowly they are moving on to the outer world. They have got their own independence. They have been selected in their all respective people. Okay, so in this way slowly and slowly we could see that Iraq is directly having a stabilized form of government जो कि अच्छा है अगर हम लोग को वेस्ट एशिया को अगर थोड़ा बहुत शांति से रखवाना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट दिस country of West Asia being Iraq not in stable period, okay, not in a stable economy, देन यहाँ पे पूरे जो हम लोग का एक लाइक एक क्रूड ऑयल का जो एक हम लोग का रिसोर्सेज का नेचुरल गैसेस का जो एक हम लोग का स्टॉक है ये स्टॉक पाइल पूरा टोटली ब्रेक हो जाता है और एक कंट्री अगर इंस्टेबिलिटीज में चला जाता है तो उसके लिए पूरे रीजन को भुगतना पड़ता है एंड ऑब्वियसली द होल वर्ल्ड व्हेन द फ्लक्चुएशंस ऑफ द क्रूड ऑयल कैन बी सीन बिकॉज इराक इज डायरेक्टली अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ दिस क्रूड ऑयल एज वेल एज द गैस रिसोर्सेस। ओके, तो इसीलिए अभी जब यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट से हम लोग बहुत कुछ we could directly have in touch with this country, okay, so that we could directly reap their benefits, reap their respective natural resources for our basic use. तो ये बेसिकली ये जो नया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आया है इलेक्ट होके ऑफ दिस पार्टीज, तो ये यहाँ पे वही के लिए डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे उन लोग का मेन मकसद है कि ये जो वायलेंस क्रिएट किया गया था, जो इंस्टेबिलिटीज किया गया था, ये कैसे हम लोग शांत करें। So that was this editorial that goes with Iraq. Okay, so that's all for today. We have this 5 number of MCQs. Please do attempt these MCQs and also join our Telegram as well as WhatsApp channel, okay, for the latest updates as well as our various programs and our PDFs. Okay, so we are starting a foundation batch on this 16th of this so not 16 on this Monday. Okay, so basically we are starting with this on this 21. Okay, so on this 21 we will be starting with this foundation batch, so therefore please do join us, okay, for the latest updates as well as various free study materials that are associated with us and that will help you in your preparation of civil services. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.